Hello, this is Kamini from Speak Like Kamini and welcome to today's video on Vocabulary Challenge Day 3. Today we are going to take up 6 words with the alphabet C. These words are better synonyms to simpler sounding words and they will help you polish your communication skills. हम लोग ऑलरेडी A और B अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स कर चुके हैं और अगर आपने इन्हें मिस कर दिया है तो आप हमारे वोकैबुलरी चैलेंज प्लेलिस्ट में जाके इनको कैच अप कर सकते हैं. Alright then, without any further delay, let's jump right in. The first word today is colossal, which means huge. विशाल के लिए, बहुत बड़े के लिए, big word के लिए हम लगा सकते हैं colossal. For example, in the museum there are colossal figures of dragons. The next word on the list today is compelling. Something that forces you to do or believe. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंपेल करती है, आपको विवश करती है कुछ भी करने के लिए, हम उसे बोलते हैं कंपेलिंग. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज़ अ कंपेलिंग मूवी. अगर मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी तो आप उसे बोल सकते हैं इट वॉज़ अ कंपेलिंग मूवी. हम सेम सेंटेंस एक आइडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड ऑन द लिस्ट टुडे इज़ कंसोलिडेट. कंसोलिडेट का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, टू मेक मोर स्ट्रॉन्ग एंड सर्टन. कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना, उस चीज़ को और मजबूत बनाने के लिए हम उसे रेफ़र करते हैं कंसोलिडेट से. फॉर एग्जाम्पल, द टू कंपनीज कंसोलिडेट टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फर्म. दोनों कंपनीज कंसोलिडेटेड हो गई एक स्ट्रॉन्ग फर्म बनाने के लिए. द नेक्स्ट वर्ड ऑन द लिस्ट इज़ क्रेडिबल. क्रेडिबल का मतलब होता है वो जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, दैट विच यू कैन बिलीव. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. Not all facts on the internet sites are credible. सारी जानकारी जो आपको इंटरनेट पे मिलती है वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो या सही हो, सो यहाँ पर हम उसके लिए credible लगा रहे हैं. The next word on the list is cumbersome, which means heavy or difficult to carry, use or wear. कोई भी चीज़ जो हमें पहनने में, करने में या उठाने में डिफ़िकल्ट हो, हम उसको cumbersome से रेफ़र कर सकते हैं. For example, legal procedures are cumbersome. कोर्ट कचहरी के कोई भी काम बहुत ही मुश्किल होते हैं, लंबे होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं cumbersome. And the last word on the list today is curtail. To make something smaller or shorter. किसी भी चीज़ को छोटा करना, हम उसे curtail से बोल सकते हैं. For example, we had to curtail our evening walk due to heavy snowfall. हमें अपनी शाम की वॉक छोटी करनी पड़ी, वापस आना पड़ा क्योंकि बहुत बर्फ़बारी हो रही थी. Alright, with that we have come to the end of this video. I hope you enjoyed listening to and learning these words and will practice them in your daily conversation to take your communication skills a notch above. If you have any question pertaining to this video, feel free to write in the comment box, and you can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram for more things on English. Tomorrow I'll be back again with the alphabet D and another 6 words to increase your vocabulary power. Don't forget to tune in. Till next time, it's bye-bye from Speak Like Kamini.